वेलकम टू जी मनी हेल्थ शो। मैं हूं नेहा बजाज और अपने हर वीडियो में, हर शो में हम आपको मिलवाते हैं एक सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल एक्सपर्ट से। और आज जी मनी हेल्थ शो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं भुवनेश्वर उड़ीसा से डॉक्टर देबरती साहा, जो कि एक ऑक्यूलोप्लास्टी सर्जन है और एक कॉम्प्रिहेंसिव थर्मोलॉजिस्ट हैं। पिछले 9 सालों से प्रैक्टिस कर रही हैं। डायरेक्टर, ओनर, फाउंडर हैं नायोनिका आई केयर, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में है। और आज इनसे हम ऑक्यूलोप्लास्टी के बारे में जानेंगे। डॉक्टर देबरती, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। एंड डॉक्टर, जैसे कि हम सब जानते हैं कि मेडिकल फील्ड के कई सारे ब्रांचेस हैं, काफी सारी चीजों के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट इट। और मैंने भी इनफैक्ट अभी इंटरनेट पे पढ़ा कि बेसिकली आंखों के करेक्शन की भी एक सर्जरी होती है, चाहे वो आईलिड हो या फिर आई सॉकेट हो, जो कि कहीं ना कहीं हमारे चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने में बहुत ज्यादा मददगार होता है। आज हम आपसे ऑक्यूलोप्लास्टी के बारे में जानेंगे। हमारे सभी व्यूअर्स को आप ये बताइए कि व्हाट इज ऑक्यूलोप्लास्टी? You can say this is the newest and most advanced branch of ophthalmologist. बहुत सारे लोगों की जानकारी नहीं है इसके बारे में, ये बात भी सच है। क्योंकि आई बोलते ही लोगों के दिमाग में आता है विजन रिलेटेड, दैट इज कैटरैक्ट एंड ऑल लगेगा उसके लिए जाना। बट दिस इज समथिंग डिफरेंट। वी आल्सो कॉल इट ऑकुलर एडनेक्सा। सो आई के आसपास के एरिया का बेसिकली हम ऑकुलोप्लास्टी टेक्स केयर ऑफ आंखों के आसपास के एरिया, नॉट द आई बॉल पर से, बट अराउंड दैट द eyelid, lacrimal apparatus and the socket in which eye remains, that is called orbit. These are the 3 main areas where oculoplasty surgeons work. Any disease of these 3 areas, that lacrimal, lid and orbit, comes under our oculoplasty surgeons jurisdiction. Infection, trauma, cancer, congenital or developmental abnormality, anything of these 3 areas comes in oculoplasty surgery or subspecialty of oculoplasty. आपने बड़े अच्छे से समझाया कि बड़ा न्यू और एडवांस्ड सर्जरी है, जो आजकल लोगों को लोग अवेयर हो रहे हैं, धीरे धीरे उनको पता चल रहा है। एंड मैम, आपके पास जब पेशेंट्स आते हैं, किस एज ग्रुप के वो होते हैं, व्हाट आर द कॉमन आई प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से वो आपके पास आते हैं? एज ग्रुप का मैम कोई लिमिट नहीं है। Patient can come as early as 1 month of age with a problem of continuous watering from the eye. If you know, few kids have continuous watering from their eyes because the tear drainage pathway is not developed completely. So that we call it as congenital nasolacrimal duct obstruction. So from the very beginning of the life to very advanced age group, cancers, patients can come with cancers. So there is no age limit actually. So patients come with various lid problem, like few are congenital problems, just a drooping of the eyelid. Have you seen any patients like one eye little small, one eye little small, upper lid is low, down, other eye is normal, or maybe both eyes are small like that. Eyelids have various other problems, like it has infection, it has a post-trauma cases like accident में cut हो गया, या फिर advanced age group में eyelid becomes lax, very loose. There are different problems of the lid margins. Lashes may rub the eyes, or lashes are outside diverted like that. And also the cosmetic patients, like has a bulky eyelid, not looking good. So those patients also we get for eyelids. For lacrimal apparatus, we usually get the patients who has a problem of lacrimation, like continuous watering from the eye. Their drainage pathway is disturbed. Okay. It can happen at the early age, but more commonly it occurs in the middle age group patients, and females are more predisposed. And it can happen after trauma, any kind of trauma in eye area or face area also. And for the orbit problem, like patient has a protruded eyes, or eyes retracted inside, or there are various other problems in the orbit which can present in different ways. In some patients, it can be bubbly eye, continuous bulging out and going inside.
like those kind of problem usually. And again, there is no age limit. A patients can have various kind of problems in all age groups. Okay, so very well explained, ma'am, कि क्या-क्या चीजें हैं, क्या-क्या दिक्कतें हैं. Drooping of the eyelid is again a very common thing. और कहीं ना कहीं मैम अगर आंखें हमारी सिमेट्रिकल नहीं है, कोई इशू है, तो डेफिनेटली इट अफेक्ट्स आवर फेशियल ब्यूटी एज वेल. एंड मैम, व्हाट आर द सॉल्यूशंस दैट ऑक्यूलोप्लास्टी ऑफर्स? क्या हर चीज में बेसिकली सर्जिकल ऑप्शन ही है? No, though it's a predominantly surgical branch, there is very limited area of medical management actually. But those are like cases of infection. Those infections can be controlled by medications, not directly related to surgery. And also few cases like adjuvant medications are required along with the surgery, like eye cancer. For eye cancer, you need a chemotherapy also, you need a surgery also, you need radiotherapy also. These are different kind of things. Mostly for the eyelid correction, other than the eyelid infection, just like a sty or something like that, other eyelid problems are usually managed by surgery only, because patient only comes for that. A ptosis or eyelid retraction or a ectropion or entropion cannot be managed by medicines. That's why I told that it's like basically a surgical branch, not exactly very few cases like infection and all those are managed by medications. Most of the cases surgery is needed. Surgery is done for correction. And ma'am, does your specialty also includes cosmetic surgery? Yes, as I said, few patient comes with bulky or bulgy eyelids, and if you have seen the northeast zone people have small slant, our eyes has a little slant laterally upwards, but they have a slant like downwards and a single crease eyelid. Mongolian face. If patients come for correction of those things like a double crease, making a double crease, boggy eyelids, correction of those things, and a very bulky upper lid, we call those blepharoplasty. Correction of those. If you have ptosis of the brow area, brow comes down. So correction of those also comes in oculoplastic surgery. Okay, very also, you know. Also, right now the cosmetic surgery, the oculoplastic surgeon has engaged themselves in little more areas and engaged themselves improving the facial cosmesis as well, like facelift, Botox, fillers, and all those things. Okay. I guess you know that. And ma'am, the treatment options, as you said, for all these things, if you can just give a little touch and go on this. For the cosmetic part, yes, you said those are areas where not only surgery, but there are few other methods like non-surgical methods like injections, injecting Botox, injecting fillers to cover up, like injecting fillers in those areas. You have seen few patients have very deep lower lid crease, very tear trough, we call it tear trough. To fill up that, we have kind of operation also, and if patient does not want to go for the surgery, we can inject fillers over there. And you have seen crow's feet, like corner of the, if patient opens their mouth or smiles, they have lots of creases over there. Those can be corrected by injecting Botox. Few patients have very deep corrugator lines over the brow. Those also can be corrected, managed by Botox injections and all. For facial thing, few patients have very hollow cheekbone and this area flattened. So those things are managed by injecting fillers. And as I said, that blepharoplasty is basically a surgical correction of the eyelid and giving it a proper shape. So डॉक्टर देवरती, आपने हमें बताया कि आंखों की करेक्शन भी होती है, किसी की एक आंख छोटी है, बड़ी है, टोसिस है,
या फिर कितनी सारी चीजें हैं बेसिकली ओक्यूलोप्लास्टी में। एंड अगर आप भी इन सब चीजों को फेस कर रहे हैं तो एक ओक्यूलोप्लास्टिक सर्जन को जरूर मिलें, क्योंकि वो आपकी सारी समस्याओं को समझ पाएंगे। सो ऑन दैट नोट डॉक्टर देबरती, हम आपको थैंक यू कहना चाहते हैं जी मनी टीम की तरफ से कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आप हमारे शो में हमसे जुड़ी। थैंक यू। तो ये थी डॉक्टर देबरती जिन्होंने आज हमें बताया, हमारा परिचय करवाया ओक्यूलोप्लास्टी के बारे में, क्या होती है, किनको जरूरत पड़ती है, कितनी सेफ है और क्या डिफरेंस लेकर आती है ये आपके चेहरे में ओवरऑल। सो आई एम श्योर आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक आप हमें शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके भी बता सकते हैं। ऑन दैट नोट मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलूंगी आपसे जी मनी हेल्थ शो के एक नए एपिसोड में विद न्यू सुपर स्पेशलिस्ट एंड अ न्यू मेडिकल एक्सपर्ट। टिल देन अपनी सेहत का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।